name is Isha Tarek, and today we'll be discussing summary completion IELTS reading session. So it's the last day for reading section of IELTS, and हमने ये इन 2 weeks में IELTS reading को ही discuss किया. So let me just share my screen. ओके सो बेसिकली यही हमारे पास रह गए थे जो हमने डिस्कस नहीं किया, बाकी सारे सेक्शन हमने डिस्कस कर लिए फॉर द रीडिंग. सो बेसिकली व्हाट इज समरी कंप्लीशन. सो उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि समरी क्या होता है. समरी इज लाइक यू कैन से द कंसाइज वर्जन ऑफ होल डेटा और द लाइक वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन. सो उसका एक कंसाइज फॉर्म होता है जिसमें वो कंक्लूजन्स को डिस्कस कर रहे होते हैं एंड इट्स लाइक अ मोर कंसाइज एंड ब्रीफ फॉर्म ऑफ ऑल सच डेटा. सो दिस वुड बी समरी. सो हमें एक समरी दी गई होगी जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे एंड वी हैव टू कंप्लीट इट दैट समरी फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन ऑन और डेटा. सो ये हमारा टास्क है फॉर टूडेज लाइक क्लास. ओके सो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास दो टाइप्स के इसमें सिनेरियोज आते हैं कि हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई होती हैं और उसमें कुछ ऑलरेडी उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए गए होते हैं दैट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कुछ ऑप्शन दिए गए होते हैं, मे बी A to H इवन ऑर्डर दिए गए होंगे A to F. हमारे पास लाइक ए विल बी ऑप्शन कुछ राइट किया होगा वर्ड एंड देन इट विल आस्क अस दैट विच वर्ड इज सुटेबल फॉर विच फिलिंग द ब्लैंक. तो इस तरह से आता है. एक हमारे पास ये वर्जन है. देन हमारे पास वर्जन है like same as it is we have to put the text or the word from the data. Okay one is like you have to choose the options from given like from given alphabet. You have to choose the option and second is कि आपने like same as it is जो text है वो find out करना है from the information. And one thing to be consider in this second type is this कि अगर कोई verb है या कोई भी हमारे पास नंबर है या कुछ भी है आपने उसको चेंज नहीं करना. इफ सम वर्ब इज इन लाइक इट्स फर्स्ट फॉर्म वी से तो उसके आपने उसको लाइक पास्ट फॉर्म. इफ इट इज इन प्रेजेंट फॉर्म you don't need to change in its past form. Okay for example we have run. Okay so don't need to change it in any other form. Okay running or something आप same as it is put करना है in filling the blank. So this would be the summary completion और ये दो types के होते हैं. हम फोकस करेंगे कि हम पहले मल्टीपल चॉइस का डिस्कस कर लें एंड इफ द टाइम विल लेफ्ट वी विल बी डिस्कसिंग also about the word like how we can complete summary by words. ओके सो यहाँ भी हमारे पास मेंशन है दैट वर्ड्स फ्रॉम गिवन बॉक्स एंड अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आर गिवन. सो ये हमारे पास टू टाइप्स होती हैं. अच्छा इसमें अब हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या होगी. पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस तरह के होते हैं. ये हमारे पास यहाँ दिया गया है लाइक वी विल बी हैविंग फ्यू ऑप्शंस. यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और इससे रिलेटेड हमने अपनी जो ये सारा हमारी समरी दी गई है ये पूरा जो हमारे पास पैसेज है ये इन्फॉर्मेशन है इसकी एक कंसाइज और स्मॉलर वर्जन है like that we called as summary. तो उसको हमने complete करना है by reading out this and by choosing from these options only. Okay this is the second type. ये second type है जहाँ हमारे पास कोई options नहीं दिए गए but we have to find out the words from the given information. So ये हमारे पास types होती हैं जो कि आपको आर्ट्स रीडिंग के थर्ड सेक्शन में मिलेंगी when you will be doing the full test. Okay so yeah let's move towards the strategy. So इन दोनों की strategy थोड़ी सी different हो सकती है but at the broader end edge it would be like similar. So first of all हम करेंगे क्या कि we will be learning सबसे पहले तो आपने instructions पढ़नी है because instructions will be important in this case that you have to recognize that either it's
the correct letter or correct like words you have to put. So इसके लिए आपको आपने ये यहाँ से अपनी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेनी है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, that you have to read out the summary, even you can skim and scan the summary and then you can highlight the important words. इवन यू कैन डू लाइक दिस, दैट आपने जहाँ तक हमारे पास फर्स्ट हमारा एंड हो रहा है वहाँ तक आप हाईलाइट कर लें एंड देन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम लाइक दिस इंफॉर्मेशन कि ये कीवर्ड्स कहाँ हैं. आप उसी कीवर्ड्स को लोकेट करके देन अपनी इंफॉर्मेशन जो है आप करते रहेंगे एंड देन यू विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग लाइक दैट. एंड इवन आप ये भी कर सकते हो कि आप इन ऑप्शंस को लाइक यू कैन एक्सक्लूड द ऑप्शंस. ओके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ए हमारे पास हो गया तो यू कैन एक्सक्लूड दैट. ऑल्सो यू कैन सी हियर हमारे पास सिर्फ यहाँ 6 जो है वो दी गई है फिलिंग दी ब्लैंक्स, बट आर ऑप्शंस आर मोर. ओके, सो इट वुड बी लाइक दिस, द ऑप्शंस विल बी मोर बट like our statements which need to be filled will be lesser than that. So these this would be a thing also. और यही मैंने आपको बता दी स्ट्रेटेजी. लेट मी जस्ट समराइज द स्ट्रेटेजी ऑल्सो. सो सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन चेक कर लेनी है, देन यू हैव टू रीड और हाईलाइट द कीवर्ड्स. देन next thing is you can scan what is the relevant section. Okay, what section is relating to this specific question. यहाँ कौन सा वो सेक्शन जो है वो रिलेट कर रहा है. एंड देन फोर्थ थिंग इज, अब आपने इसको जो मैच हो गया, it means which section is matching to this thing. So you have to now read out this thing also carefully, and that specific information that is matching towards that you have to like read out that also very keenly and केयरफुली. सो उसको आपने केयरफुली रीड कर लेना है और यहाँ बहुत ज़्यादा पैराफ्रीजिंग भी हुई होगी तो आपने उसको भी देखना है और देन आपने अपना करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस. सो ये हमारे पास हमारी लाइक स्ट्रेटजी होगी. एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर प्रैक्टिस टेस्ट टुडे. लोगों का अब तक कोई भी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क. ओके, लेट्स स्टार्ट. हमारे पास यहाँ प्रैक्टिस पेपर लाइक फ्रॉम आर्ट्स 19 है, एकेडमिक रीडिंग टेस्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारे सबसे पहले हम लोग यहाँ रीड आउट कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस. कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ फ्रेजेस ए टू के बिलो. राइट द करेक्ट लेटर्स ए to K in the boxes on your answer sheet. So here is some title of this whole summary: Maryam Mirza Khani. Okay, लेट्स इवन यू कैन डू लाइक दिस कि आप इस पूरे का कर लें कीवर्ड्स और इवन यू कैन डू कि आप हर का लाइक अलग अलग करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस is in the field of mathematics. Okay, so this would be a keyword. She was the only female holder for prestigious fields medal. Okay, this would be a keyword, a record that she retained at the time of her death. Okay, so this is the first one. Okay, next, the math held title. Sorry, however, math held little for her as a child, and in fact, her performance was below average. Okay, I am assuming कि यहाँ कोई synonym use हुआ होगा for the average in our data. By a difficult puzzle, she was by a difficult puzzle that one of her siblings showed her. Okay. Later, as a professional mathematician, she had an inquiring mind and proved herself to be when things didn't go smoothly. Okay, so I am highlighting here inquiring mind. Okay, when things didn't go smoothly, she, okay, let me just figure out. Also, there is later. She said she got the greatest from making groundbreaking discoveries. Okay, in fact, responsible for extremely
Okay, like this. That's it. So now we highlighted our keywords. From that we can match specific information. So हम लोग यहाँ से match करते हैं. So it was saying that it is only, and now we have to focus on only the one statement. Okay. So यहाँ हमारे पास है कि वो mathematician थी and she was only female holder. Okay, who died at the early age of 40. She was only woman to win the fields. Okay, ये मुझे यहाँ सिमिलर लग रहा है. ओके, फॉर आर एंड ऑल्सो दिस मैथमेटिकल जो उन्होंने रेफरेंस दिया है, दिस इज ऑल्सो सिमिलर. ओके, सो लेट्स रीड आउट नाउ. अब हमें ये मिल गया कि यही है, तो हम इसको अब कीनली स्टडी. लेट अस स्टार्ट बाय लुकिंग एट द मॉडर्न जीनियस मरियम मिर्जा खानी, हु डाइड एट द अर्ली एज ऑफ 40. शी was the only woman to wield the Fields Medal, the mathematical equivalent of a Nobel Prize. Okay, let's see the options we have. Okay, so she was regarded uh, like dash in the field of mathematics because she was the only. Okay, so we have to find out something that is. Okay, let's read out more even. It would be easy to assume that someone as special as Mirza Khani must be one of those gifted children, those have extraordinary ability in specific sphere of activity or knowledge. ओके, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यहाँ हमारे पास नोबेल प्राइज से इन्होंने लाइक सिनोनिम वाइज इट वुड बी, इफ वी कंसिडर अपील इट वुडंट बी. देन determined is regarded as determined. No. Integrate single, I think it would be achievement. What do you all think? Then we have devoted. मैम अचीवमेंट ही कहीं हो रहा है क्योंकि नोबेल प्राइज ही है. विन द फील्ड्स मैथमेटिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ नोबेल प्राइज. Yeah, we can go for achievement, even if you consider devoted. So what is your perspective about that? That, but they didn't even use that specific synonym for that. मैम ये इक्विवेलेंट भी इसका कोई सिनोनिम. May it, okay, like one thing that is also confusing here, that we can take this thing that it is saying. मैम हम यहाँ पे यूनिक यूज कर सकते हैं क्योंकि वो शी वाज द ओनली वुमन थी. मैम यूनिक ही आएगा क्योंकि नोबेल प्राइज यूनिक होता है ना. इक्विवेलेंट ऑफ अ नोबेल प्राइज. इस सेंस में हम यूनिक को कंसीडर कर सकते हैं. Okay, yeah, we can consider even unique. These are two valid candidates. Like, I think for achievement, it's not making sense. Am I right? Maryam Mirza Khani is regarded as achievement in the field of, we can say, regarded as unique in the field of mathematics because she was the only female. That's next things are also supporting that. Okay, so we can go for like H, unique. Okay.
Let's move forward also. It wouldn't, because also I considered it because here is using special also, so we can say that special is the synonym for this. Okay, so let's move forward. Like however, math held little, performance was below average and difficult. Okay, we can make it until here. So it is saying that uh, the it would be easy to assume that someone as special as Mirza Khani must have been one of those gifted children. Okay, so it's not those who have an extraordinary ability in a specific sphere of activity or knowledge. Okay, so it's saying that उनके जो like साथ के जो students थे, they were, it means like that math held dash for her as a child, and in fact her performance was until she was, okay, some conditional is here, that until she was like that, she let's find out this thing. But look closer and different story emerging. She was born in Tehran, Iran, and she went to highly selective girls school, but math wasn't her interest. Okay, so this is the thing we found. Interest related and reading was, she loved novels and would read anything she could lay her hand on. Okay, so I am assuming something related to interest or something. So she was. Okay, now we can read out also what was the turning point for her. After, as for math, she did rather poorly as it for the first couple of years in her middle school, but became interested when her elder brother told her about what he would learn. He shared a famous maths problem from a magazine that fascinated her, and she was hooked. Okay, so here I think for the math problem and all that, it is like suggesting from that the difficult puzzle. So math held little bad, am I right? In the negative sense, it was that she was not having interest on that. Okay, so as a child, so we can check. It मैम was not. इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब बट बिकेम इंटरेस्टेड व्हेन हर एल्डर ब्रदर टोल्ड हर, इससे इनोवेटिव इन Let me just make it like this. Okay, let's assume like we did this thing, am I right? It's already filled. Now we can go for appeal. Maths had little appeal for her. It wouldn't fit. What do you think? मैम आई थिंक मुझे शायद लग रहा है कि ये जो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। किधर गया? Okay, so this is the determined also we cannot consider, but this is a synonym of interest. Maths had यस little इट्स, interest. So हाँ it जी is, मैम। yeah, it is a synonym of interest. So we can consider this one intrigued for her as a child. So maths held little intrigued for her as a child. Okay, so we can consider this thing. What do you think? Because specifically we have to find out the synonym of interest. Any other thing like single, we cannot fit in this thing. And then devoted can be also, but
What do you think in this? मैम सी के साथ ही चले जाते हैं अभी यस डिवोटेड मैम, का नहीं। सी वाला ही लग रहा है जो भी ऑप्शन हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें तो इन्वॉल्व वाला ट्राई किया जा सकता है। जो ज़्यादा चांस है वो सी के लग रहे हैं। Okay, let's move with C. Okay. Next thing is we already found it. There was a condition here that until she was here also there would be some like I think devoted or something like there would be the synonym but on different मैम extent. ये वर्ड्स हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। I think one time ही use करते हैं हम words. मैम इसे ऊपर करें में तो शायद फिर मैं जो Exactly, here is not mentioned anything that we can use it one or more time, but it's like that maximum time ही one time ही होता है. सर वो बताया होता है आई थिंक जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना उसमें। तो इसमें जो थर्ड वाला है वो मुझे लग रहा है कि इसमें इंट्रीग्यूट आएगा। जो सेकंड वाला है उसमें हम दोबारा देख सकते हैं। until she was डिवोश इसमें डिवोशन का कह सकते हैं डिवोटेड बाय नहीं until she was by difficult puzzle that one of her siblings was she was डिटरमाइन का भी I think the second one is a little in conflict, but I also think that for the third one it would be C, would be most closest. मैम नेक्स्ट कर It, लेते हैं मूव क्वेश्चन के ऊपर तो। okay. Okay, so we have later as professional mathematician. मैम She थर्ड वाला रहता है until she was वाला। like I think it would be like this is like fascinated her and something that she was hooked involved इसमें the specific synonym for this word would be curiosity. Yeah, the specific synonym is fascinated or intrigued. So it would be closely related to this thing that we should fit C here, and there should be something else we should put in 2. Maths little. Okay, we can choose it at the end also. We can see this second one. Okay. Next, we have later as a professional mathematician. It's मैम ये जो 3 वाला आपको शी clear हो? जो हमारे पास ये स्पेसिफिक इसका सिनोनिम है ना हमने यहाँ से किया है कि ये फैस्किनेटेड एंड हुक्ड, तो इसके स्पेसिफिक जो सिनोनिम्स आ रहे हैं ना वो यही है, इसका डायरेक्ट सिनोनिम है इसका। मैम ये इधर डिवोटेड का था शायद ये इस शी वाज हुक्ड इसको डिवोटेड के साथ नहीं एफ एफ को नहीं कंसीडर कर सकते हम। Of like fascinations means like you are excited. It goes in that term. Like you are excited about something, you got मैम वो excited. एग्जैक्टली ये फिर नेक्स्ट उसने एंड शी वाज हुक्ड हुक्ड और डिवोटेड। You are saying कि हम जो थर्ड में है वो like devoted रखें? यस
but like devotion is like मैम so doesn't सेकंड have. वाले में, Yes. मैम सेकंड वाले में अचीवमेंट नहीं आ सकता? A record that she retained at the time of her death. However, maths held little achievement for her as a child. No, it's like we have to do here. Maths held little for her as a child, and in fact, her performance was below average until she was. So there would be something that would be related because this is supporting that previous line. You can see her performance was below average. So there would Okay. be even this is not, this will not be there, but हमें कोई और इसमें से होगा. Maybe appeal if we consider. Maths had a little appeal for her. What is the direct synonym for appeal? Okay, let's consider other even for the second. So if we consider determined, a little determined, I think with little determined, it would be contradicting. What do you think? If we consider B. यस मैम, ये डिटरमाइन तो होता है कि हम और लिटल कंट्राडिक्ट कर रही हैं दोनों. And single will also be not there. Little single as a child, for her as a child. Achievement, as sir was saying, could be a little candidate. Then devoted must held a little devoted. मैम मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह वो ऊपर कह रहे हैं ना कि prestigious field medal a record that she retained at the time of her death. However, मतलब कि उस टाइम शायद जो है ना उसके लिए ये लिटिल अचीवमेंट हो. Okay. Like we can consider this again, like at the end, if maybe achievement कहीं fail हो जाए and we can have less options then we can find out if we ओके are मैम. finding this difficult. So अब हम लोग 4 पे move करते हैं. Here is later as a professional mathematician, she had an inquiring mind and proved herself. And okay, so like inquiring mind and she proved herself. So we can move forward in adult life. It is clear she was curious. Okay, inquiring mind and curious is matching, am I right? And then excited by when she did also resolute it in the face of setbacks. Okay, this line smoothly when it didn't go smoothly. It is matching. One of her comments sums it up. Of course, the most rewarding part is the Alia moment. Okay, the excitement of discovery. Okay, so I think it would be the next things, but we have to like be here for 4. Okay, so here is they proved herself to be something. In adult life, it is clear that she was curious, excited by what she did, and also resolute in the face of setbacks. Some sort of synonyms for from this line would be okay. So let's consider कि हमारे पास अगर हम लोग even we can go for okay. So हमने कुछ इस तरह का word होना चाहिए that even she got the setbacks or even the things didn't go smoothly, but she was there and she was मैम इंटेंट के साथ नहीं जा सकते फिर हम, मतलब चीजें वर्क नहीं भी कर रही थी तो फिर भी वो इंटेंट इरादा था कि
मैम आई थिंक इधर डिवोटेड आएगा। Like in suggestion जैसे आप कह रहे हैं intent, it would be in the context of intention, that if she have intention, it wouldn't be the synonym of something determined. We need some resolute. We want a synonym for resolute, I think, to be here. I think, what do you think मैम about determined or devoted? मैम डिवोटेड आएगा क्योंकि क्योंकि वो कह रहे हैं, इसमें ये शो करा रहे हैं कि चीजें स्मूथ नहीं जा रही थी लेकिन फिर भी वो उनको ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवोटेड का मतलब ये है कि आप मतलब कि इजी वे में लेके चलें। Okay, but in my thinking, I think it would be determined, क्योंकि resolute का direct synonym determined ही होता है. Devoted is something, uh, these are like the synonyms also, but what do you think? Like yes sir, आप कह रहे हैं devoted, so आप बता सकते हैं कि why do you think that this would be not the candidate, the determined one? यहाँ उन्होंने यही प्ले गेम किया हो कि काफी ज्यादा सिनोनिम्स जो है वो आपस में रिलेट, सॉरी, जो हमारे ऑप्शंस है वो रिलेट कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक दैट रेजोल्यूट के क्या मैम इसमें सिनोनिम्स? डिटरमाइंड लग रहा है क्योंकि यस सर. रेजोल्यूट और डिटरमाइंड दोनों का मीनिंग पुख्ता इरादा के होते हैं। Yes, devoted is like it's related to spirit. That if you like it's synonyms, but ये इस तरह से होता है कि that if you are devoted for your country, or like you have high spirits for something. But determined is like I'm saying it is more practical. जैसे वो resolute क्या कह रहे हैं, it's more practical, and it's like more like in the form of spirits, in the form of morals, like if you have high morals about something, and if you have practical like determination or practical resolution, so it would be like this. मैम आप फिर डिटरमाइंड ही आएगा अगर रेजोल्यूट को देखना है तो। यस, बिकॉज हमें यहाँ लाइन से आपने बस इस लाइन में ही देखना है कि क्या कनेक्ट कर रहा है. सो वी कैन कंसिडर बी हियर. नेक्स्ट है हमारे पास, शी सेड शी गोट द ग्रेटेस्ट फ्रॉम मेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज. Okay, so we can find out her comments were this, that the most rewarding part, okay, is the Alia moment. Okay, the excitement of discovery and the enjoyment of understanding something new. But most of the time, doing mathematics for me is like being a long hike with no trail, um, and oh, it's not highlighted. Okay, and no end in the sight. Okay, she said she got the greatest there is excitement also and enjoyment also. The most rewarding part is the Alia moment, the excitement of the discovery and enjoyment of understanding something new. But most of the times doing mathematics for me is being a long hike and no end in the sun. Okay. So I think something would be related to excited. She got the greatest or even rewarding. Most is related to like greatest, am I right? तो ये synonym बन गए. What do you think? मैम मे बी सेटिस्फैक्शन या ग्रेटेस्ट अचीवमेंट।
Satisfaction will be like a far apart thing. Enjoyment and satisfaction, if we relate it with enjoyment. But if we relate with rewarding part, it could be achievement or any other thing. Yeah, it could be achievement. Any other else wanna say something about it? Okay, so it's a little confusing. The like whole part is this. We have to go for this is the whole thing where we have to find out this one. Let's read out one more time. In adult life, it clears that she was curious, excited by what she did, and also resolute in the face of setbacks. On her comment sums up. Of course, the most rewarding part in Alia moment, the excitement of discovery and enjoyment of understanding something new. But most of the time, doing mathematics for me is being on long hike with no trail and no end in sight. Okay, so what do you think? What could be the meaning of this phrase? Like she would be more much involved, am I right? That she is defining it with a phrase. मैम सेटिस्फेक्शन लग रहा है वैसे, है ना? यस मैम, क्या आप अपना थिंकिंग प्रोसेस बता सकती हैं कि आपको कैसे लग रहा है सेटिस्फेक्शन? आप कैसे सोच रही हैं, लाइक हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस? एनीवन अदर? सर अहमद, सर जीशान, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? मैम इसमें सेटिस्फेक्शन के और अचीवमेंट दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा लग रहा है वो सेटिस्फेक्शन, वो इस सेंस में कि उसने एक्साइटमेंट की उससे ली थी और उससे एंजॉयमेंट भी उसके साथ हुई थी जो उसने आलिया मोमेंट किया था। यस मैम, एक्साइटमेंट के साथ ही जा सकते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग समथिंग न्यू, डिस्कवरी एंड एंजॉयमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग न्यू आगे लिखा है। बट मोस्ट मैथमेटिक्स फॉर मी इज being on a long hike with no trail. Uh, Okay, so we can consider satisfaction. Satisfaction is J. बट मुझे थोड़ा सा लॉजिकली ये लग रहा था दैट हम लाइक अचीवमेंट्स की तरफ, like but she said she got the greatest achievement from making groundbreaking discovery and uh, also we can consider it in that context कि अगर हम लोग किसी achievement की बात करते हैं, so we also use that sporting words like won or something, and if she is getting something we have to find out that thing. What do you think? In that case we can say it would be satisfaction. What do you think about that? मैम इसमें अगर हम देखें तो डायरेक्ट जो स्पोर्ट आ रही है तो वो अचीवमेंट की आ रही है, लेकिन उसके आगे वाली लाइन में जो उनकी साथ ही आती है ना आलिया मोमेंट,
तो उसमें वो एक्साइटमेंट के बारे में बताती है, तो उसमें उसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन बन रहा है। फर्स्ट वर्जन के हिसाब से हमारा अचीवमेंट बन रहा है, जैसे आपने भी बताया स्पोर्टिंग। Yes, sir. Okay, so let's move forward for the next one. Can you hear me? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So let's move for the sixth. Like from making groundbreaking discoveries, and in fact, she was responsible for some extremely dash mathematical studies. Okay, that trail took her to the heights of original research into mathematics. मैम इंटेंट लग रहा है आई थिंक इसका, है ना, लाइक ओरिजिनल रिसर्च तो। I think इसमें you हम can see intent will be a purpose or some like in it's basically the short form intention. It's the verb for intention. So like intention will be, I think it wouldn't fit here. She was responsible for some extremely intent mathematic studies. It would be a small term like with extreme. I think it would be, yes sir, आप क्या ऐड कर रहे थे? ये देखिए यहाँ उन्होंने कहा कि वो हाइट्स, आई थिंक हमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स सिनोनिम्स से आगे हमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स में भी देखना चाहिए। अब यहाँ देखा हुआ है मैम हाइट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, मतलब कि ओरिजिनल या फिर वो मैम नॉर्मल। यस मैम ओरिजिनल रिसर्च मीन के जो उसकी अपनी क्रिएटेड हो, जो उसने खुद रिसर्च की हो। इसमें आई थिंक इनोवेटिव आएगा। इनोवेटिव का मतलब है किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस कराना, और रिसर्च वो होती है जो हम खुद कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करें। यस एग्जैक्टली। सो या दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। यस मुझे भी इनोवेटिव ही लग रहा है। आई वाज सेइंग कि लाइक ही सेइंग शी वाज सेइंग कि उसने कुछ ट्रायल की थी। आई थिंक okay, this thing, that trail that she got in so much in depth into the mathematics कि उस ट्रेल ने, अगर वो उसकी जो ओरिजिनल रिसर्च थी उसको और भी हाइट्स पे ले गया। it means like it did something different, we can say. So in innovative का मतलब is it's also different, am I right? कि आप कुछ different करते हो, it can get into that contextual meaning. आप लोगों को कोई और लग रहा है valid candidate for this? नहीं मैम, अभी इनोवेटिव के साथ ही ठीक लग रहा है ये। Okay, so let's check for our second one that was missed. मैम सेकंड वन को भी देख लेते हैं, और ये जो हमने सेकंड लास्ट लगाया है ना, इसमें अचीवमेंट जो है ना बेस्ट बैठ रहा है। Yes, exactly. So क्योंकि अगर अगर हम सेंटेंस की भी बात करें, सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो कभी भी ऐसा वर्ड नहीं आता कि ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट यूज होता है। yes, exactly. हमने second को पहले देख लेते हैं, then we can look forward to other. ओके ओके मैम। Okay, so हमारे पास यहाँ है कि however maths held little dash for her as a child, and in fact her performance was below average until she was. So I think we should go for contextual meaning also. If it is something here, like we can consider here कि हमारे पास यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें।
Okay, we can even start from here. It would be easy to assume that some someone as special as Mirza Khani has been one of those gifted children, those who has an extraordinary ability, okay, in a specific sphere of activity or knowledge. But look closer as different story emerges. So, like she retained at the time of death. Until here, I think they had not discussed anything about her past, that she was bad at mathematics at past. Okay, but look closer and a different story emerges. Mirza Khani was born in Tehran, Iran, and she went to highly selective girls' school. But maths wasn't her interest. Reading was. She loved novel and would read anything she could lay her hands on. As for maths, she did rather poorly as it for the first couple of years in the middle school. Okay, I think this all is related to the next one. So all the content we have is this. Okay, so we can again try that what could fit in here. So the used ones are these. I is used. Okay. Achievement we still didn't use, and determined. Determined also we used it. We didn't use this devoted. Okay. Now we have single. Had little single it wouldn't fit, am I right? Involved. What do you think about involved? Satisfaction already हमने इसको कर दिया, और डिवोटेड जो है वो हमने, अब हमारे पास जो ऑप्शंस है वो डिवोटेड है, इन्वॉल्व, अपील, सिंगल एंड अचीवमेंट. सिंगल तो हम पहले इसको कर लेते हैं, दैट इट विल बी एक्सक्लूडेड. अचीवमेंट लाइक दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग फ्रॉम दैट, बिकॉज हम लोग लिटिल के साथ किस तरह से यूज करेंगे, लाइक अचीवमेंट, लिटिल अचीवमेंट, मैथ्स लिटिल. इन माय ओपिनियन इट वुडंट फिट हियर, बिकॉज अभी तक उन्होंने उसकी कोई भी अचीवमेंट के बारे में इसमें बात नहीं की. हमने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में रहना ना, तो इसमें उन्होंने कोई अचीवमेंट के बारे में बात नहीं की. दैट वाज इन व्हेन ही वाज चाइल्ड, सॉरी शी वाज व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, तो उन्होंने तब कोई अचीवमेंट के बारे में उसकी बात नहीं की. सो वी कैन एक्सक्लूड इट. मैम यस सर. मैम मुझे तो थर्ड वाला जो हमने सी लगाया है वो भी गलत लग रहा है. अब आई काम थिंक करते हैं. जो जी आई जी. थिंक जो हमने थर्ड में लिखा है वो सेकंड में आना चाहिए, और थर्ड के अंदर आएगा इन्वॉल्व्ड. क्योंकि वो इस सेंस में है कि अगर आप देखें तो वो कह रही है कि चाइल्ड एंड in fact her performance was below average until she was involved by a difficult puzzle that one of her siblings showed her. तो ना वो हमने ना इस तरह से निकाला है, बिकॉज यहाँ हमारे पास आया था फेस्किनेटेड एंड हुक्ड, तो उसके सिनोनिम्स के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है. क्योंकि हम लोग लाइंस वाइज भी हम लोग चल रहे हैं ना, कि यहाँ जो स्पेसिफिक हैं वर्ड्स, हम उसका सिनोनिम्स अगर देखें जो हमने थर्ड सेलेक्ट किया. वी कैन सबमिट दिस नाउ. हम देख लेते हैं दैट व्हाट कुड बी द रॉन्ग वंस. व्हाट डू यू थिंक? हम पे डबल ऑप्शन तो कोई भी नहीं आएगा, जिस तरह हमने सेकंड और थर्ड यस दोनों में दिस, सी या लगाया हुआ इसको हम लोग और कर सकते हैं. है. सेकंड वाले में या या अपील और इंटेंट, इन दोनों में से कोई एक चेक करें.
in to explain. Okay, so आई थिंक सेकंड का अपील ही था. सो इसको हम देख लेते हैं. इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग दैट व्हाई इट्स अपील है. The passage is about Maryam Mirza Khani. That this is, but she was not interested in math and she liked reading. Answer exclamation is. This means the math was not interesting to her when she was a child. Okay, so the correct answer is because the passage said that math didn't hold much interest for her as a child, meaning it didn't have an appeal to her at that time. Okay, so we used to think uh, appeal as like we can say that हमारे पास appealing हमें कोई चीज़ लग रही होती है तो हम उसको उस context में ले रहे होते हैं. तो उन्होंने इस तरह से यूज़ किया है कि मैथ उनको उसको तब अपीलिंग नहीं लग रही थी बट और उसका परफॉर्मेंस भी बुरा जा रहा था until her brother got him some puzzle and then she started getting interest. तो ये इंटरेस्ट के उससे ही सारे तकरीबन इंटरेस्ट के सिनोनिम्स हैं. सो इसमें अगर कुछ उसमें लाइक फॉर इवन फॉर द सब्जेक्ट और एनीथिंग वी कैन यूज अपील इन दैट. अदरवाइज जो बाकी हमारी एक्सप्लेनेशन हैं दिस एक्सप्लेनेशन फॉर सी जैसे कि सर कह रहे थे इसमें वही है कि यहाँ देखें फेस्किनेटेड उन्होंने यूज़ किया. तो फेस्किनेटेड जो है वो उसका डायरेक्ट सिनोनिम बन रहा है इसलिए जो है वो like this show that she became intrigued by math and which led to her future success in that subject. Okay, any other explanation? There was for the fourth one someone. Okay, इसमें जो है इसमें भी थोड़ी confusion थी for the fourth जिसमें हमें okay sorry it was 5 जिसमें थोड़ी आ रही थी कि हम achievement अगर यूज कर सकें. So for the resolute तो हमने कह दिया था that was determined, yeah it was thing, but for the fifth one okay it's saying the correct answer J because Mariam Mirza Khani felt a lot of satisfaction from her discoveries and she mentions that most rewarding part of her work is the excitement of understanding something new. Okay, and the sixth one we said that was okay. We choose it for I am right. Innovative, yes, it was justified earlier that she did his original research to high levels. That's why we said that it's innovative. ये थोड़े से मुश्किल हैं बट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएंगे. बट इससे भी थोड़े से ज़्यादा मुश्किल जो है वो ये है जिसमें हमें डायरेक्ट जो है वो वर्ड्स ढूंढने हैं. सो मे बी आपको ये इजी लगे बिकॉज इसमें तो डायरेक्ट वर्ड्स जो सेम वर्ड्स हैं आपने वही कॉपी करके यहाँ आपने पेस्ट करना है. बट इसमें हमें सिनोनिम्स और उसका पैराफ्रेज का भी मीनिंग पैराफ्रेज और जो पैराफ्रेज हुआ होता है उसमें भी मीनिंग फाइंड आउट करना होता है. और इवन फ्रेजेस का जैसे यहाँ एक फ्रेज आई थी उसका भी मीनिंग फाइंड आउट करना होता है जैसे ये फ्रेज थी. सो दैट इज अ थिंग. यस सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर जीशान और एनीथिंग. वाले के अंदर ऑप्शन था हमारे पास पास कुछ ज़्यादा ही थे है ना. यस सर इसमें ऐसे ही होता है कि हमारे पास और भी मतलब लाइक ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और उसमें से हमें यूज कम होते हैं हमारे ऑप्शंस. ओके आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है यू कैन जस्ट आस्क एंड इवन समवन वांट टू प्रेजेंट ऑन फ्राइडेज इवन so he can send us his or her name so we can consider.
ओके Okay, then हम session end करते हैं. Already time is over. So that's all about today's session, and we did summary completion today. And from the next week हम लोग writing start करेंगे. Writing में हम लोग grammatical like first grammar से start करेंगे. कि हम उसमें basically होता ही है कि हमें essay writing देखना होता है, और उसमें vocabulary हम साथ साथ build करेंगे, और साथ हम grammatical mistakes जो हमारी common होती हैं उसको resolve करने की try करेंगे. So that's all, and I hope I will see you in the next session. सतीशान आप लाइक लाइव स्ट्रीम ऑफ कर सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज ऑल. आई एम ओके मैम, अल्लाह हाफिज.